Hello everyone. Welcome to the party. Gonna welcome. Everybody gonna welcome. Chalo guys. Hello Sia. Hello everyone. So आज this is not the usual time. We generally meet at 7 p.m. लेकिन today we are here at 5:30 p.m. सेशन करना था. I was not available at 7 p.m. But you know what? सेशन करना है. Consistency. You have to be consistent, right? So अगर थोड़ा भी टाइम मिले, so we should meet almost on daily basis, going by the same basic principle. A session today at 5:30 p.m. स्टार्ट करते हैं. दो इंपॉर्टेंट चीजें. Do show up daily at 7 p.m. Till cat for quant. आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. हम लोग सब कुछ करते हैं. Whatever is required for a student who is preparing for cat is taken care of in 7 p.m. session, right? Also, the second important thing, today itself, Ritu ma'am is going to conduct a webinar over a very important topic for you guys. Read it carefully. The topic is what stream you should use after, you should choose after your selection in a B school. Should you go with marketing, finance, project management, HR, ops, data analytics, बहुत कुछ है. Okay. Ma'am is gonna conduct a webinar today. Limited seats है. Do register. Link description में होगा. Get your concerns sorted with this session. Let's start with the first question of the day. Chalo, I'll give you standard 90 seconds. All the questions that we'll be discussing have very bright chances to feature in actual CAT examination. In fact, they are at par with what questions are coming these days in CAT examination. This is the first question. You got 90 seconds. Try karo, ठीक है? And then we will discuss these questions together. Come on, बच्चा. PQR have 63 A and B cookies respectively. P gives 24 cookies to Q and is now left with 1/3 as many cookies with R. If the three of them together had 37 more cookies, they would have had 120 cookies on an average. Find the number of cookies left with P. Come on, बच्चा. आ जाओ. Come on. Hello, Merak. सर अलजेब्रा मुझे डिफिकल्ट लग रही है, प्लीज हेल्प. देखो, द वे आई कैन हेल्प, आई एम हेल्पिंग. ओके, टिल एग्जामिनेशन हम लोग टिट्स एंड बिट्स में अलजेब्रा काफी रिवाइज करेंगे. टुमारो अगेन इज अ सेशन ऑन अलजेब्रा. कम टू द सेशन. ना साथ में करते हैं, यू विल फील गुड. दैट्स व्हाट वी मेंटर्स आर फॉर, राइट? अच्छा, द काउंटडाउन इज अप. 90 सेकेंड्स आर अप. इसका तो आंसर दो कम से कम फिर. शिखर, अलजेब्रा डिफिकल्ट लग रहा है, इसका आंसर दो. आ जाओ. आज you have to answer at least 3 questions. No, PQR, they have A 63 and B cookies respectively. PQR, they are having PQR. P is having A, Q is having 63, and R is having B cookies. PQR, right? Now, P gives 24 cookies to Q. P ने 24 cookies Q को दे दिया. Okay, P ने 24 cookies Q को दे दिया. So after the change, P is left with A minus 24 cookies and Q के पास कितना है बेटा now? 63 plus 24, which is how much? 87. This is 87. Q is having 87 cookies.
Parth says 83. Very good. Shia says C. Parth says 83. And R के पास R still has B cookies. Okay. Now after this change, P is now left with 1/3 as many cookies as with R. So after this change, P के पास जो है ना, that is 1/3 of R. So we can say A minus 24 equals B by 3. A minus 24 is as good as B by 3. Bolo yes sir, yes sir. If the three of them together had 37 more cookies, they would have had 120 cookies on an average. अच्छा, इनके पास टोटल कितना कुकीज है? इनके पास टोटल कितना कुकीज है? सर इनके पास टोटल कुकीज इज A minus 24 plus 87 plus B. This is the total number of cookies with them. This is the total number of cookies with them. A minus 24 plus 87 plus B. What they are saying कि अगर इनको 37 और कुकीज मिल जाए, अगर इनको 37 और कुकीज हो जाए, सो इनका एवरेज वुड बी 120. एवरेज 120 का मतलब क्या? एवरेज 120 का मतलब क्या? एवरेज 120 का मतलब टोटल इज 360. सो दिस टोटल इज 360. ओके, यही है ना? देखो, A 63 and B. P gave 24 cookies to Q. Hence, P is left with A minus 24. Q is left with 87. R is left with B cookies. Also, it is given the number of cookies left with P is 1/3 of that of what R has. So, A minus 24 is equal to B by 3. This is given in the question. Also, total number of cookies with them is A minus 24, 87 plus B. If they have 37 more cookies, तो उनका एवरेज 120 का हो जाएगा. Right? So you can solve this to find the value of B or A because linear equation in two variable है. Replace A minus 24 with B by 3. इसको replace कर दो with B by 3. We can solve for B. What do I have? 4B by 3 is equal to 360 minus 87 minus 37. Take the help of calculator. 59. Didn't read the last line carefully. अच्छा, इसको केयरफुली सॉल्व किया अगर, तो आपको क्या मिलता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? सर 8 3 11 110 124 360 minus 124 is 236. 236 into 3 is how much? So 236 into 3 is how much? 708. 708 divided by 4 is how much? 708 divided by 4 is 177. So B is 177. B is 177. How much is A? How much is A? B upon 3. How much is A? A is B by 3 plus 24. A is B by 3 plus 24. So 177 by 3 is how much? 59 plus 24 is 83. A is 53, B is 177. What is asked? Find the number of cookies left with P. So number of cookies left with P is A minus 24. वही वापस 83 minus 24 59. वापस 83 minus 24 59 is the answer. मैंने लास्ट लाइन नहीं पढ़ा. चलो यहां तो एटलीस्ट यू हैव दैट ऑप्शन, बट एग्जाम में यू नो व्हाट, अगर आपने एक छोटा सा क्लू मिस किया ना एक बार, आप बार बार मिस करोगे. इट हैपेंस. आपको नहीं दिखता है वो आपका एरर. ट्रस्ट मी, कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर मेरा कैलकुलेशन एरर कहां हो रहा है, डू टेल मी. कैलकुलेशन एरर कहां हो रहा है, डू टेल मी. एंड व्हाट ही हैज डन, उसको मल्टीप्लाई करना था 276 माइनस एक्स एंड लेट्स से 130 प्लस वाई माइनस वाई, ऐसा मल्टीप्लाई करना था. व्हाट ही वाज डूइंग दिस, अभी उसने क्या किया,
देखो 276 इंटू 130 करेंगे पहले हम, प्लस में आएगा, फिर ये -276y होगा ना, एंड फिर -130y होगा और प्लस xy होगा। उसने ये माइनस का प्लस लिख दिया, सो 276 इंटू -y, उसने प्लस 276y लिखा, एंड उसको अपना एरर नहीं दिख रहा बार बार, ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कहां एरर है, कहां एरर है। सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग, सॉल्व इट फुल फोकस, ये बेसिक एरर नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन है ये, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। And he has scored -10 marks, right? This is -10. सर मैंने वीआरसी का मॉक दिया था, स्कोर नेगेटिव आ गया, बहुत सैड फील हुआ। जो तुम्हें सैड फील हुआ नसिया, उसको बस्ते में रखो और फिर सेशन अटेंड करो मैम का जाके। ओके, डेली बेसिस पे सेशन अटेंड करो, एंड व्हाट एवर मैम इज सेइंग डू फॉलो दैट। आपको क्या फील हुआ बिल्कुल मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट कुड हेल्प यू इज अटेंडिंग सेशंस विथ मैम। Forget about all of these things. अच्छा लगा, बुरा लगा, don't judge your prep. Move ahead. Try to give your 100%. That is the best that you can do. Forget about everything else. Guys, do like the session? You got last 20 seconds, beta. Try answering this. I'm here, na? Why are you taking tension? VRC में आएगा 95%. Others you will score more than 99 percentile. Overall percentile would be 99.89 plus. Don't stress out. Do not stress out. In an exam, there are 50 questions. In an exam, there are 50 questions, and each question has one correct response. Okay, right? Each question fetches 3 marks if you get it correct. So there are 3 types of responses: correct, incorrect, and unanswered. UA, unanswered. For every correct, you get plus 3 marks. For every wrong, you get -1 marks. For every unanswered, you get 0 marks. Okay, chalo. Marks. Okay. If Shiv scored -10 in the exam, find the maximum number of incorrect responses he could have had. Sir, confidence नहीं आ रहा है. You want me to repeat my answer, right, Rahul? Question solve नहीं हो रहा है. Keep on practicing, and you are not analyzing the question properly. Then you are not analyzing. देखो, जिस भी question में तुम अटक रहे हो ना, whatever question you got stuck, analyze that question. Try and analyze that question. Don't run away. Just say, suppose you are solving, let's say 5 questions. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Okay, आपसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ. So these 2 questions. Analyze them. मतलब क्या पूछा था इसमें? What is the solution? What is the approach? And was it difficult? Ask yourself. Do proper analysis. फटाफट ऐसे बुक नहीं पढ़ते हैं, ऐसे फोटोजेनिक दिमाग नहीं है हमारा. वी आर नॉर्मल गाइस. हम ऐसे करके ऐसे नहीं पढ़ते हैं. यू नो व्हाट, पढ़ो यार, एनालाइज करो. चलो, फॉर एवरी करेक्ट यू आर गेटिंग +3 marks. फॉर एवरी इनकरेक्ट यू आर गेटिंग -1 marks. लेट्स से उसने C क्वेश्चन करेक्ट करे, I क्वेश्चन इनकरेक्ट करे. So the marks scored by him would be 3C -I,
and this is equal to minus 10. Hi Anna. 3c minus I equals minus 10. Also we know कि correct plus incorrect plus unanswered. Total number of questions कितने हैं बेटा? 50 है total number of questions. This is total number of questions, and this is the equation for total number of questions, and this is the equation with the marks he could fetch. Okay? आ जाओ. और ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सिया. आ जाओ. Now, so I can write this I is equal to 3c plus 10. I is equal to 3c plus 10. I have to maximize I. मुझे I को मैक्सिमाइज करना है. तो अगर मुझे I को मैक्सिमाइज करना है तो करेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने होंगे. हाँ या ना? अब करेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमाइज करने होंगे. अब करेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? करेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10. Why 10? Because when you put C as 10, अगर आपने C को 10 पुट किया, so this would be 3 into 10 plus 10. I would be 40. I हो जाएगा 40. So I plus C is 50. So total number of questions could be at max 50. है ना? अगर मानो आपने C को 10 से ज्यादा पुट कर दिया, लेट्स से आपने C को पुट कर दिया 11, तो 3 into 11 plus 10. Okay, so this becomes 43. तो C 11 and I 43 पॉसिबल ही नहीं है. इसको अगर 0 भी किया तो भी LHS will not be equal to RHS. So the maximum value that C can take is 10 only. The maximum value that C can take is 10, and in that case I would be 40. So there could be at max 40 wrong attempts. 10 correct attempts, 40 wrong attempts, and this would be 0. This would be 0. This would be 0. Bolo, yes sir. Try next question. Try this one. Under 90 seconds. Try this question. Under 90 seconds. Come on, beta. Awesome. Try this question. Come on, guys. Rahul. देखो, that's the problem. सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. यार तुम अपना आंसर दो तो इधर. I rarely see you guys engaging with the session. At least मुझे ये तो figure out करने दो, what is the problem? You are asking one such question जिसका आंसर देने के लिए I should know you at least a little. I can tell you many things about Sia, मतलब academic related. She is good in mathematics, उसका बेसिक्स क्लियर है, छोटे क्वेश्चन आराम से कर लेती है, मीडियोकर क्वेश्चन भी कर लेती है, मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अटक जाती है. मे बी थोड़ा सा इसका क्वेश्चन समझने का लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, लिटिल बिट ऑफ. इफ द क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकियर तो लैंग्वेज में थोड़ा इश्यू होता है. बट हाँ, her focus is not there while solving the question. I can tell you many things about Sia. हुई सर, हाय सर, हुई सर नहीं, यू आर नॉट दैट. क्या हुई वाला, क्या हुई ना चतुर. क्या हुई. गुड इवनिंग अर्पित. क्या हुई. चलो, what is the answer to this question? Anybody? Parth? Come on, Golu. अच्छा, अगर अटक गए इस क्वेश्चन में तो डू लेट मी नो. अगर डाउट आ गया तो मेंशन डाउट इन द चैट. अगर डाउट आ गया तो मेंशन डाउट इन द चैट. एरर. अच्छा. अच्छा, do like the session guys once.
Bit confused. Parth is bit confused. Let's take away the confusion. Come on, देखो. In a forest, the ratio of number of cats to the number of dogs and elephants together is 5:8. So cat upon dogs plus elephant is 5/8. Okay. While the ratio of number of dogs to the number of cats and elephant together is 3:4. So dogs upon cats plus elephants is 3/4. है ना? ये given है. Find the ratio of number of cats to that of number of elephants. आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व. इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स अटेम्प्ट. अब देखो ये ना आपको एक चीज देख के योर आईज शुड देयर शुड बी ग्लेयर इन योर आईज. अरे सर CDE, if I add this to numerator, okay, if I add this to numerator, क्या हो जाएगा? I can rewrite this as, क्योंकि देखो इधर भी है ना CDE, इसको भी ऐड करेंगे. So what you will get? This will become C plus D plus E upon D plus E equals 13/8. Right? And here again CDE ultimately C plus D plus E upon C plus E would be 7/4. है या ना? इधर भी न्यूमरेटर में CDE है, इधर भी न्यूमरेटर में CDE है, बट राइट साइड में द रेशियोज आर डिफरेंट. नहीं, सेशन थोड़ा चलेगा और इट्स नॉट अबाउट टू एंड. 20-25 मिनट्स और है. सो फोकस ऑन दीज टू नाउ. If I make the numerators same, तो मेरे लिए लाइफ वुड बी वेरी इजी. राइट? तो what we can do, अब आपको समझ रहा होगा what in what direction we are going. C plus D plus E upon D plus E, what do we have? We have 13/8. Okay, and we also have C plus D plus, अच्छा इधर रहने दो. We also have C plus D plus E upon C plus E as 7/4. न्यूमरेटर सेम करने के लिए, because न्यूमरेटर में you have CD everywhere, न्यूमरेटर सेम करने के लिए I can multiply this by 7, I can multiply this by 13. है या ना? So 13 into 7 would be 91. 8 sevens are 56. 13 sevens are 91. 13 fours are 52. Right? लिख सकते हैं. हटा दो इसको. So this is 91/56 and this is 91/52. The entire pain in the world is gone. Now, if I say that C plus D plus E is 91x, अगर मैंने 91x बोला CDE को, इसको 91x बोला, तो D plus E would be 56x. है ना? And C plus E would be 52x. Put D plus E back in the equation. D plus E को put करके I can calculate C. If I put this into this, I can calculate C. C would be 35. 35x. है ना?
इफ आई पुट c प्लस e इनटू द इक्वेशन तो आपको d मिल जाएगा, d वुड बी 39x, d would be 39x, and if you have c and d you can put it in any of the equation to find the value of e. ओके कहीं भी पुट कर दो, बहुत सारे तरीके हैं, d यहां पुट कर दो, c और d यहां पुट कर दो, you'll get e as 17x. Sorted? Sorted? So this is what you have now. What is asked? Find the ratio of cats to that of elephants. Cats to that of elephant is 35x upon 17x. 35 upon 17. Got it? फ्रैक्शन में जा रहा है, माइट नॉट बी रॉन्ग, बट हम लोग फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते थे ना बेटा, सिया फ्रैक्शन को अवॉइड किया जा सकता था इन दिस केस. ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड. अब आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, तो मुझे ना चीजें दो दो बार लिखनी पड़ रही है, बट वेन यू आर सॉल्विंग ऑन योर ओन you can solve it really quick. Okay, chalo next question. Before we move to next question, cat ke liye you don't have left with enough time. Last full-fledged batch we have launched, achieve batch. इसके बाद आपको crash courses मिलेंगे, booster courses मिलेंगे. Last full-fledged batch is achieve batch. Subscribe it. अभी offer भी चल रहा है, right? Use code core MBA to get the maximum out of it. कुछ भी क्वेरी है, फॉर्म का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्वेरी रेस करो, आवर टीम विल सॉर्ट इट आउट. ओके, नाउ यू डोंट हैव टाइम टू वॉन्डर हियर एंड देयर, सेटल डाउन समवेयर. सॉर्टेड? चलो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखो दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में भर भर के. कैट एग्जाम इज आस्किंग सच क्वेश्चंस in abundance. In abundance. Come on bacha, try this question. Also like the session. Let's go. Read it carefully, do proper maths and get it sorted. Read it carefully, do proper maths, get it sorted. Come on, bacha. Thirty is not the right answer, Merak. Yes, it's not right. Chalo. I'm happy that you are engaging. Anybody else? The time's up. क्या हो गया? I'll wait couple of minutes आपके रिस्पॉन्स का. अर्पित, सिया, पार्थ, मेरक, give me the correct answer. Give me a response. चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. देखो, रामलाल buys a pen for 100 and sells it after making it X% higher. No profit. Okay, so we are talking about Ramlal.
Ramlal. Ramlal bought it for 100 and he marked it at X% higher. So the selling price would be, mark price would be 100 plus X only, and there is no discount. Ramlal के केस में there is no discount. So कहीं ना कहीं selling price is also 100 plus X. Selling price is also 100 plus X and profit is X. रामलाल के केस में, रामलाल के केस में, right? Very good. What about श्यामलाल? What about श्यामलाल? सर श्यामलाल जो है ना, श्यामलाल, श्यामलाल, he bought a pen for 200 rupees. He bought a pen for 200 rupees. Marked it up by 3%. So what is mark price? What is 3x% of this? Sir, 3x% of 3x by 100 of 200 is 6x, sir. So marked price is what? Marked price is what? 200 plus 6x. Marked price is 200 plus 6x. After selling it at a discount of X%. So he gave a discount of X%. और डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है बेटा? चलो ये तो हो गया. नाउ डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है? डिस्काउंट इज X% ऑफ मार्क्ड प्राइस. हाँ या ना? So discount is X by 100 of this marked price. 200 plus 6x का. Yes or no? जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, so this is 2x plus 6x is square by 100. हाँ या ना? This is the discount. This is the discount. Got it? चलो, what is the selling price? Selling price is always marked price minus discount. So this is my marked price. My marked price is, this is my discount. My marked price is 200 plus 6x minus 2x minus 6x square upon 100. This would be my selling price. तो कहीं ना कहीं selling price क्या हो रहा है? 200 plus 4x minus 6x square upon 100. बोलो yes sir. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? This is the discount. इस डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से माइनस किया, you will get the selling price. This is the selling price. बोलो yes sir. Now if this is the selling price, the cost price was 200. How much is the profit? How much is the profit? Sir, profit जो है ना, selling price minus cost price होता है. So this additional amount, this additional value, this thing is the profit. ये जो है, जो extra मिल रहा है आपको, ये आपका profit है. So my profit here is 4x minus 6x square by 100. 4x minus 6x square by 100. Got it? And what this is, what the question says, that Shyamlal is making the same profit as Lamlal. दोनों का profit same है. So this value is equal to this value. The profit in both of the cases is same. अभी निकाल रहा हूं. I need this space. I hope I'm clear with this. You can always go back and watch it what I had written here. Right. So according to question, profit made by Ramlal is equal to profit made by Shyamlal. I can say x is equal to 4x square minus 6x square upon 100. Hayana, this gives me 3x is equal to 6x square upon 100. 6x square is equal to 300x. 6x square
माइनस 300x इक्वल्स 0. सो x की वैल्यू इज ईदर 0 और x इज 50. x is either 0 और x is 50. ओके, बट यहां क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि हैज मार्क्ड इट अप x% हायर. Hence the answer you should be answering is 50. Okay, x either could be 0 or x could be 50. So इस क्वेश्चन का आंसर we will say yes, also 50. दो आंसर थे सी आइस के. हाँ, दोनों का प्रॉफिट इक्वल किया ना बेटा, दोनों का प्रॉफिट इक्वल किया ना. एक तो 0 पे, यस, 0 एंड 50. आ जाओ. गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, this is an easy question. It's not difficult. 0 and 50, both of them are answer. But here क्या है कि ऐसा mentioned after making it x% higher. So we'll give 50 as the answer. 0 भी satisfy करता है criteria को. ठीक है. Question में they will specify it more clearly. ठीक है, but here we can conclude, we will conclude that since the price is x% higher, तो 50. Okay. हाँ, अगर cannot be determined या more than one of the above MCQs होते तो that was a different scenario. So but stating 50 doesn't solve the question, I feel. हाँ, क्या बोल रहे हो कि 50% ऊपर करने से आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे? आ जाओ, देख लिया जाए. पार्थ राउत सेज कि सर 50 अप करने के बाद अगर हम कर रहे तो नहीं आ रहा सर. चलो देख लिया जाए. आ जाओ, कैलकुलेटर का थोड़ा यूज पड़ेगा. रामलाल के केस में, चलो, रामलाल के केस में कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 50. रामलाल के केस में तो स्ट्रेट अवे प्रॉफिट 50. हमें देखना है कि यहां 50 आ रहा है कि नहीं, यहां 50 आ रहा है कि नहीं. ठीक है, 50 तो आएगा ना बेटा, क्यों नहीं आएगा. 200 है, 200 को पहले ऊपर करो. तुम कितना ऊपर करना है सर? 200 को ना 3x%, मतलब 150% से ऊपर करो. सो इफ दिस इज कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 500. 150% से ऊपर किया. ओके, मार्क्स आफ्टर सेलिंग इट अ डिस्काउंट ऑफ x%, उसको x% का डिस्काउंट दिया, 50% का डिस्काउंट दिया, इस पे डिस्काउंट दिया 50% का. सो व्हाट इज 50% ऑफ 500? 250 का डिस्काउंट है, 250 से प्राइस कम हो जाएगा. सो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस? 500 माइनस 250. 250 इज द सेलिंग प्राइस. देखो, 200 में खरीदा था, 250 में बेच रहा है, 50 का प्रॉफिट है. 200 में खरीदा था, 250 में बेच रहा है, 50 का प्रॉफिट है. यहां भी 100 में खरीदा था, x 50 पुट किया तो x इज 50 स्ट्रेट अवे. ओके सर, इफ x% हाई नहीं होता तो 0 भी बोल सकते थे यार. अभी भी देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अभी भी अगर वो एक 0 भी ऑप्शन रखते हैं, 30 ऑप्शन रखते हैं, 50 ऑप्शन रखते हैं, कैनॉट बी डिटरमाइंड रखते हैं, तो यू शुड मार्क कैनॉट बी डिटरमाइंड. यू आर वेरी मच राइट.
सिया यू आर वेरी मच राइट। इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था आंसर्स के केस में, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में ले लेना, ठीक है। रीडिंग है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये अटेम्प्ट करो आप प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्लास में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है नेक्स्ट। लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, try this question, Guru. I'm here only. चलो, 10 Path says 10 times up. ABCD is a rectangle with sides AB is equal to 56 and BC is equal to 45. ABCD is a rectangle. Acha, tomorrow we have mini marathon of algebra. Remember na? 1 p.m. Chalo. So ABCD is a rectangle with AB being 56, with AB being 56 and BC being 45. Let E be the midpoint of CD as given in question. So, E is the midpoint of side CD, then the length in centimeter of radius of in circle of triangle ADE. So, मुझे AE ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इसका ADE में जो इन सर्कल होगा, ADE में जो इन सर्कल होगा, ये जो इन सर्कल है, इसका रेडियस निकालना है, इस इन सर्कल का रेडियस निकालना है, राइट। चलो, now we know that this side is 45, this side is midpoint, so this would be 28. This is hypotenuse, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, this is 90 degrees. AE is the hypotenuse, and what is the length of AE? Sir, AE would be square root of 45, 28. Yes or no? Yes, sir. Chalo. So what is this? This is 2025 plus 784. So this is square root of 2809, and 2809 is square of 53. So the hypotenuse is 53. And for a right angled triangle,
For a right angled triangle, yes, Sia. For a right angled triangle, the in radius is for a right angled triangle. For right angle triangle, ऐसे होता है area by semi perimeter. But for right angle triangle, in radius is base plus a plus b minus c by 2, right? Where c it represents hypotenuse. A and b are sum of legs minus hypotenuse divided by 2. So this would be 45 plus 28 minus 53 divided by 2. 73 minus 53, 20 divided by 2, 10 is the right answer to this question. 10 is the right answer to this question. Awesome, awesome, Gautam. Guys, चलो we'll stop here आज के लिए, ठीक है? I have some commitment जिसकी वजह से मैं 7 बजे सेशन आज नहीं ले रहा था. I have to go somewhere. It's 6:20 already. It's 6:20 already. Actually, area of half into base into height, हाँ area है वो. चलो. Guys, निकलते हैं आज. Let's meet tomorrow at 1 p.m. I'm a little bit of rush. So tomorrow at 1 p.m. algebra का mini marathon we will conduct. Okay. Ask your friends to also join. Let's meet tomorrow at 1 p.m. Okay. जाने के पहले do like the session. जाने के पहले do like the session. चलो बच्चा, have a great day ahead. Be a part of my official Telegram channel. Join it. Let's meet tomorrow at 1 p.m. Okay.